हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीथ एकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप हमसे जुड़कर हायर मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर जिसमें कि इंटीग्रेशन के फार्मूलाज थे उनको डिस्कस करा था, और सेकेंड चैप्टर में डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे हम लिमिट एज अ सम के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका हम डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं। तो वो हमने देखा लास्ट क्लासेस के अंदर। आज हम रीमान इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट रीमान इंटीग्रेशन। तो आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द चैप्टर, दैट्स रीमान इंटीग्रेशन। रीमान integration. Okay, so we will start this lecture with some definitions, very important definitions. So let's discuss some definitions. Okay, so first we talk about the bounded above. What is the function is bounded above? Here we just take the function. हम यहाँ पर जो फंक्शन ले रहे हैं that is defined in some closed interval a comma b. Function is f which is defined in this closed interval a comma b to some real number r. Okay, so this is the function. तो bounded above, what are the function? तो bounded above functions क्या होते हैं? Bounded above. So a function f or fx, you can just write here. A function fx is said to be bounded above if sorry, bounded above if there exist if there exist a real number, इसका नाम कैपिटल के रख दो, such that this fx is always less or equal to capital K for all x from this interval I. I means the closed interval a comma b. So it means that we have some upper bound like this. Somewhere it is k, and for this is bound. This is a boundary, and the function is not crossing the value. This value. Okay, so if there exists some k, some whatever the real number is maximum, बहुत बड़ी real number हो या बहुत छोटी हो, it doesn't matter. But if there exists a real number, so that value of the function is always lesser or equal to that real number, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? बाउंडेड above. If function is not bounded above, if function is not bounded above, if function is not bounded above, तो हम क्या कह सकते हैं? इट मीन्स फॉर एवरी रियल नंबर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज क्रॉसेस दैट रियल नंबर. ओके, अगर हम यहां पर कह रहे हैं कि तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू सारी इधर ही रह जा रही है. अगर हम कह रहे हैं बाउंडेड अबव, इसका मतलब एक रियल नंबर मिल गई जो हमको बाउंड कर रही है. उसके उससे बड़ी फंक्शन की वैल्यू नहीं हो सकती. बट अगर हम कह रहे हैं कि फंक्शन बाउंडेड अबव नहीं है, इट मीन्स इफ यू गिव एनी ऑफ द रियल नंबर, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी क्रॉसेस दैट रियल नंबर. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? if function is not bounded above, it means for every रियल नंबर कैपिटल के अगर ही हम ले लेते हैं, there exist there exist some point in this interval a comma b, such that the value of the function is crosses this real number capital K. इट मीन्स कोई भी रियल नंबर हमारे पास ऐसा नहीं है जो उसको रोक पा रहा है ना?
For every real number, the value of the function is more than that real number. So function is not bounded by. It means you can say the function is tending to plus infinity. So that type function is not bounded above. Okay. So we understood the definition of bounded above function. Okay. Next we discuss, and this capital K is called upper bound. It's called upper bound. Okay. Next we talk about the definition of the bounded below. Bounded below. Okay. Similarly, bound from below side. Okay. So how we will define this? A function fx is said to be bounded below if there exists a real number is small k is belonging to R, such that the value of the function is always more than this real number k for all x belonging to this interval a comma b. It means there is some restriction in below side. It means if you draw the real line, this is your R. So there somewhere k, then value of the function is always more than this k. So this type of function is called bounded below if there exists some real number. Okay. If we are saying the function is not bounded below, it means for every real number, there exists some point in this interval such that the value of function is lesser than that real number, and the function is tending to minus infinity. So that is called not bounded below. If you are saying function is not bounded below, so how you can define it? Not bounded below. It means for all for all small k in R, there exists some point x not in this interval a comma b, such that the value of the function x naught it lesser than this small k, and it means function is tending to minus infinity. Function is tending to minus infinity. You can just here you can just remember here function is tending to minus infinity. Got it? So this is the definition of bounded above and bounded below. It means there exists, if bounded above की बात करें तो इसका मतलब there exists some real number, वो बाउंड कर रही है फंक्शन की वैल्यूज को. ठीक है, उस वैल्यू को क्रॉस नहीं कर रही है फंक्शन की वैल्यू. ओके. सिमिलरली इफ बाउंडेड बिलो कर रहे हो तो वो भी क्रॉस नहीं कर रही है इन लेफ्ट साइड. ओके. फंक्शन को हम बाउंडेड कब कहेंगे? जब वो बाउंडेड अबव भी हो एज वेल एज जो बाउंडेड बिलो भी हो. तो बाउंडेड फंक्शन तो a function said to be bounded sorry said to be bounded if it is bounded above as well as bounded below. दोनों हो, है ना, बाउंडेड एबव या फिर बाउंडेड बिलो, दोनों चीजें हों तभी वो फंक्शन को हम बाउंडेड बोलेंगे. तो अगर हम इसको डिफाइन करें इस तरीके से, इट मींस इट मींस देयर एग्जिस्ट k and capital K, small k and capital K in R, such that the value of the function is always lies between
capital K and small k for all x belonging to this interval R. So this type of function is called bounded function. कुछ डिफिनीशंस में इस तरीके से भी लिखा जाता है, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में जो डिफिनीशन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, or simply you can reduce the definition like that. A function fx is said to be bounded if there exists a positive number capital K such that mod of fx is less or equal to capital K for all x belonging to this interval a comma b. So this is similar way of the above definition, because अगर हम इस मॉडुलस को हम ओपन करते हैं तो दिस लुक्स लाइक दिस fx is less or equal to capital K and greater equal to minus capital K. तो दिस इज, तो यहाँ पर जो अपर बाउंड है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दिस कैपिटल के, दिस इज कॉल्ड अपर बाउंड एंड दिस इज कॉल्ड लोअर बाउंड, है ना। जब हम बाउंडेड बिलो की बात करते हैं तो दिस इज योर लोअर बाउंड। ओके ओके, सो दिस इज bounded function. तो bounded function means there exist two real numbers, small k and capital K, that such that the value of the function is between that two real numbers, whatever the value of x from this interval. Okay, so this is the bounded definition of the bounded of a function. So if a function is bounded, okay. Next is supremum and infimum of the function. So this is a very nice definition to be defined, supremum and infimum, because एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, आई एम गोइंग टू डिफाइन द सुप्रीमम, सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर supremum of function. ओके, सुप्रीमम ऑफ फंक्शन, ध्यान दीजिएगा। एक चीज ध्यान दीजिए, इफ आई एम सेइंग कि fx इज बाउंडेड अबव, पहली बात तो हम इस फंक्शन को ले रहे हैं, दिस इज बाउंडेड above. Okay, bounded above, it means there exists some capital key, ठीक है, so that the value of the function is less or equal to, this is fx is less or equal to capital K for all x in this interval a comma b. This is meaning of the bounded above. Okay, if the function is bounded above and it means there exists some real number capital K, okay, so that the value of the function is always less or equal to that capital K. Okay, अगर हम कह रहे हैं कि ये k से छोटा है, तो अगर हम k से बड़ा कोई वैल्यू ले लेते, सपोज दैट हमने कैपिटल K1 ले लिया, ओके, तो फंक्शन की वैल्यू K1 से भी छोटी है, इसका मतलब दिस इज एन अपर बाउंड, दिस इज एन अपर बाउंड, दिस इज एन अपर बाउंड, ओके, एंड दिस fx इज लेस देन कैपिटल K1, तो दिस इज आल्सो एन अपर बाउंड. Is it or not? Is it? You can also take any number k2 which is more than k1, that will also become a upper bound. So in this way you can say there are infinite number of upper bounds. So now what we will choose as a upper bound? So we are restricting, then we are taking the upper bound as much smaller, because not we are not going to, अगर हम बात करें, अगर हमको के, अगर हमें 2 है, 2 एज अपर बाउंड है, तो हम 3 पे क्यों जाएंगे, हमें जरूरत नहीं, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई फंक्शन की वैल्यू है ही नहीं ना, तो वी नीड द स्मॉलर वन इन ऑल दिस अपर बाउंड्स, क्योंकि हमारे पास अगर के अपर बाउंड है तो के से बड़ी कोई भी वैल्यू एज अपर बाउंड हो जाएगी, तो बी टेकिंग द लीस्ट अपर बाउंड, दैट इज कॉल्ड सुप्रीमम. ओके, सो अगर हम कहें सुप्रीमम
की अगर हम बात करें, सुप्रीमम दैट इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड्स है ना, या फिर साम में इसको LUB भी कहते हैं शार्ट में। सो इफ आई एम सेइंग कि दीज आर K1, K इज लेस देन K1 इज लेस देन K2 इज लेस देन K3 एंड सो ऑन, तो इसमें लीस्ट कौन सा है? अगर हम कह रहे हैं कि ये सारे अपर बाउंड्स हैं उन सब में से लीस्ट है तो कैपिटल के, तो दिस इज कॉल्ड सुप्रीमम हेयर। ओके। सुप्रीमम आपकी टेक्स्ट बुक में जो सुप्रीमम को डिफाइन करा गया है वो कैपिटल M से डिफाइन करा गया है। ओके, सो आई एम जस्ट रीडिंग द डेफिनेशन। If function fx is defined in this closed interval a comma b is bounded above, then there exists a number capital M, which is the least of all the numbers, no one of which is less than any value of fx in this comma b. So the number M is called the least upper bound. तो अगर हम इस M को सुप्रीमम कह रहे हैं, तो दिस implies that two conditions should be there. Number one, this fx should be less or equal to capital M, पहली बात, for all x इन आई। एंड सेकेंड, दूसरी बात ये कि अगर हमने कहा कि सम समथिंग के, सपोज दैट हम सेइंग कि के आई इज अपर बाउंड्स, these are upper bounds, upper bounds of fx, okay, fx के अपर बाउंड्स हैं के आईज, तो दिस m इज लीस्ट वन ऑफ ऑल दिस के आईज फॉर ऑल आई। ओके, तो ये सारे जो अपर बाउंड्स होंगे उन सबसे छोटा हो, तो दैट्स व्हाई वी जस्ट से कि द सुप्रीमम ऑफ अ फंक्शन m इज कॉल्ड इज द लीस्ट अपर बाउंड्स, मतलब जितने भी अपर बाउंड्स हैं उनमें सबसे छोटा, दैट इज कॉल्ड सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन। सिमिलरली इन्फीमम, अगर हम इन्फीमम की बात कर रहे हैं, सपोज दैट आई एम जस्ट डिफाइनिंग द इन्फीमम, ये बहुत समझिएगा अच्छे से डेफिनेशन को, क्योंकि ये बहुत काम की डेफिनेशंस हैं। ओके, तो इन्फीमम की अगर बात करें उस फंक्शन के, सो वी कैन सी बाउंड इट शुड बी बाउंडेड बिलो, पहली बात तो फंक्शन बाउंडेड बिलो होना चाहिए तभी हम इन्फीमम की बात कर पाएंगे, इट शुड बी बाउंडेड बिलो। ओके, so bounded below means it is greater equal to some small k for all x in this I means here a comma b. Okay, so if fx is greater than small k and there is some value, some real number which is lesser than small k, तो दैट इज k1, स्मॉल k1, एंड दैट इज, तो फंक्शन की वैल्यू k1 से भी बड़ी हो जाएगी। अगर हम k1 से छोटी कोई वैल्यू ले ले तो उससे भी बड़ी हमेशा रहेगी। इस तरीके से तो ये जितने भी हमारे पास वैल्यूज है, k1 k2 k3 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड लोअर बाउंड्स, all will be the lower bounds, okay, because the any number for that the function's value is always greater than, that is called lower bounds। ओके, सो अब हमको केवल अगर हम इन सारे लोअर बाउंड्स में से जो सबसे बड़ा वाला लोअर बाउंड, क्योंकि हम अगर लेस करते जा रहे हैं तो इसका मतलब है दो वैल्यूज हैं k1 k2 एंड k3 ये कम होती जा रही हैं, तो इन सारे वैल्यूज में से जो सबसे बड़ा वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स, है ना। तो जो इन्फीमम डिफाइंड है, इन्फीमम, इन्फीमम that is called greatest lower bound, test lower bound, एंड इसको हम सिंपली GLB शार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दैट इज कॉल्ड इन्फीमम। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में, दैट इज स्मॉल m। तो अगर हमने कहा कि स्मॉल m इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इट मींस इट शुड बी, पहली बात तो ये लोअर बाउंड होना चाहिए। लोअर बाउंड का मतलब है कि दिस इज m शुड बी लेस और इक्वल टू fx फॉर ऑल x इन दिस इंटरवल a, b, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये
कि अगर हमने कहा कि कोई नंबर वो एक लोअर बाउंड है, इफ आई एम सेइंग k इज एन लोअर बाउंड, so then m should be greater of this lower bound, इससे बड़ा होना चाहिए, m will be greater of this lower bound. ओके, तो पहली बात तो ये कि ये हमारे पास लोअर बाउंड होना चाहिए, दूसरा दैट शुड बी ग्रेटर ऑल द लोअर बाउंड्स. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सॉरी वो एक कॉल आ गई थी. तो समझ गए इन्फिमम क्या होता है, कि जितने भी हमारे पास लोअर बाउंड्स हैं उन सब में सबसे बड़ी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट वन. ओके, so a हो गया infimum and supremum of a function. If function is bounded, then there must be exist the supremum and infimum of the function. Okay, आइए नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिक. है ना, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं? तो या तो फंक्शन पूरा इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, दैट इज कॉल्ड अ मोनोटोनिक फंक्शन. सो monotonic function, a function f is said to be monotone or monotonic if it is either increasing or decreasing. A function fx is said to be monotone or monotonic in an interval a comma b. Okay, if it is either increasing, if it is either increasing in this interval a comma b or decreasing in throughout this interval. ओके, सो फर्स्ट अगर हम बात करें इंक्रीजिंग, या इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी बोलते हैं समटाइम्स, इंक्रीजिंग और सिंपली इंक्रीजिंग. सो फॉर ऑल x1 is less than x2, where x1 and x2 is belonging to this interval a comma b, for all x1, if x1 is less than x2, ठीक है, any pair which is x1 is less than x2, the value of the function f of x1 is lesser than f of x2, lesser than or equal. Okay, so uh, if you are moving from, if value is moving from left to right, the function is increasing, it means it increases or it's constant, so that is the monotonic increasing. Similarly, the strictly increasing, we say strictly increasing, uh, if for all x1 is less than x2, this f of x1 is less than f of x2, it means it's strictly less greater than. Okay, so this is called strict increasing. Okay, so if the function is strictly increasing, then also it is monotonic.
You can also say, because in the condition of monotonic increasing, it less or equal to. Okay. Similarly, monotonic decreasing. Decreasing means for all this pair x1 is less than x2, the function's value uh, is decreases. It means x2. The if value of x is increasing, but value of the function is decreasing, is greater or equal to this. Strict Strictly decreasing means for this way, this implies this is fx1 is simply strictly decreasing. Okay. So this is, so whatever function is strictly increasing or decreasing throughout the interval, we are just talking about throughout the interval, that function is called monotonic. अगर मान लो हाफ ऑफ द इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और हाफ ऑफ द इंटरवल में वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो उसे हम मोनोटोनिक नहीं बोलेंगे. ठीक है. तो मोनोटोनिक का मतलब है कि फंक्शन या तो थ्रू आउट द इंटरवल वो इंक्रीज ही कर रहा है, या थ्रू आउट द इंटरवल वो डिक्रीज ही कर रहा है, या कांस्टेंट हो जा रहा है बट डिक्रीज नहीं कर रहा. तो दैट इज कॉल्ड अ मोनोटोनिक फंक्शन. ओके. तो आई होप कि अंडरस्टूड मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है. अब हम बात करते हैं पार्टीशन की. पार्टीशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द रीमान इंटीग्रेशन. पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल कैसे हम उसे डिफाइन करते हैं. एंड so partition. So by partition of interval a comma b, we mean the finite set p of points. So हम क्या करने वाले हैं, we have an interval, suppose that I'm just taking an interval a comma b. ध्यान दीजिएगा. और suppose that you just draw a line, this is your real line r, और यहाँ पर हमारे पास इंटरवल है, suppose that is a and this is b. तो हम करने क्या वाले हैं कि इस इंटरवल को हम फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं. ठीक है. तो सपोज दैट हम डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज पॉइंट, सपोज दैट दिस इज 1, दिस इज योर x1, x2, x3. Similarly we can just draw up to xn minus 1, and this is your this way. ओके. तो ये हमारे पास जो इंटरवल था, जो हमारे पास ए कमा बी इंटरवल था, वो हमारे पास इनके पॉइंट्स में, ये सब इंटरवल्स में डिवाइड हो गया है. ठीक है. तो ये कुछ इंटरवल्स बन जाएंगे a2 x1, फिर x1 से x2, फिर x2 से x3, एंड सो ऑन अप टू, सिमिलरली दिस इज xn माइनस 1 टू b इन दिस. तो हमने क्या करा कि उस इंटरवल को हमने सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया. ओके. एक मिनट में चार्जर लगा देता हूँ. ओके. तो हमने इंटरवल को सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया. तो सब इंटरवल में डिवाइड करने के लिए हमने पॉइंट्स ली, है ना. वी जस्ट डिवाइड इट इन सम पॉइंट्स. तो ये ए को हमने एक्स नॉट बोल दिया, और इस बी को हमने एक्स एन बोल दिया. तो हमने पूरे ए टू बी इंटरवल को हमने यू कैन से n+1 पॉइंट्स में हमने डिवाइड कर दिया. और हमारे पास जो इंटरवल्स बन जाएंगे, सब इंटरवल्स, वो कितने बन जाएंगे, दिस इज 1, है ना. और इट इज 1 टू अप टू n इंटरवल्स हमारे पास बन जाएंगे, है ना. तो वी जस्ट डिवाइड इट इन द सब n इंटरवल्स. सो दिस पॉइंट्स इज कॉल्ड पार्टीशन of this one. So this is finite set. So we can just say looks like this. So by, we can say by a partition means of interval a comma b, a comma b, we mean that a finite set of points, set p of points
suppose that this is x naught, x1, x2 up to xn, where these all points between a and b, where this I'm just defining this is x naught is lesser or equal to x1, less or equal to x2, and less or equal to x3, and so on up to less or equal to xn is just equal to b. Okay, so how many points are there in this partition? You can see we are starting from x naught and up to n. So there are n plus 1 points in this partition. Okay, so you can just say, so the partition P consists of n plus 1 points. So it means uh, in this partition in n plus 1 points, it may be different. You can change the partitions, you can get some different partition as well. Okay, and you will get इस n पार्टीशन n प्लस 1 पॉइंट से हमको कितने क्लोज इंटरवल्स मिलेंगे या क्लोज सब इंटरवल्स मिलेंगे, n सब इंटरवल्स मिलेंगे, देखा ना 1 2 3 अप टू n. तो यू कैन से द n क्लोज्ड सब इंटरवल. Can just say x naught to x1 and x1 to x2 up to, you can sub have in this x of r minus 1 to xr, and in this last one is x n minus 1 up to x. ठीक है, and this is determined p by this partition p by p. Constitute the segments. The partition. Got it? So अगर हम लेंथ की बात करें कि हर एक इंटरवल की लेंथ को कैसे डिफाइन करा गया है, तो दिस इज डिफाइंड बाय डेल्टा आर. तो द लेंथ ऑफ आर्थ सब इंटरवल, the length of arc sub-interval interval will be denoted by delta r, by delta r, and you know that कि delta r कैसे हमारे पास defined होता है, where we can just have delta r is simply length. So length means in the term it means xr minus xr minus 1. For r is any 1 2 3, how many intervals are there? N intervals are there. Okay, so this is delta r is defined here. Now norm of the partition. Norm of a partition. सो वी कैन सी कि हमारे पास ये पॉइंट्स हमने x1 x2 xn हमने पॉइंट्स बना दी, और हमारे पास सब इंटरवल्स बन गई, और सब इंटरवल्स की हमें लेंथ पता होगी जैसे डेल्टा आर. तो इन सारे जो पार्टीशंस, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि वो इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स हो, अगर इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तो उन सबके जो लेंथ होगी वो सेम होगी. बट अगर वो पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है तो उन सारे जो इंटरवल सब इंटरवल बनी उनकी लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होगी. बट अगर हम डिफरेंट डिफरेंट होगी तो उन सारे लेंथ में से जो सबसे मैक्सिमम लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड नॉर्म ऑफ दिस ऑफ दैट पार्टीशन.
ओके, तो अगर हमने सब इंटरवल्स बना लिए, सब इंटरवल्स की हमने लेंथ निकाली, तो उन सारे सब इंटरवल्स की लेंथ में से जो मैक्सिमम लेंथ होगी, दैट इज कॉल्ड the partition, norm of the partition. So let's write here the definition of the norm of a partition. So if we are saying if P is a partition, is a partition of the interval of the interval, I'm just took here interval a comma b close interval, then the length, of the greatest of all subintervals, है ना, ग्रेटेस्ट जो लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड, दिस इज योर एक्स आर माइनस वन अप टू एक्स आर is called the norm of the partition. Partition P, and is denoted by as, so norm of P is, P means some partition, the maximum of all the lengths, जो भी लेंथ है उन सब में सबसे जो मैक्सिमम होगा दैट इज कॉल्ड द पार्टीशन। तो आर इक्वल टू वन टू अप टू एन, एन इंटरवल्स हो गए, एन सब इंटरवल्स, उन सब में जो मैक्सिमम लेंथ होगी जो उन सब में से, वो दैट इज कॉल्ड द नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। सो इट इज क्लियर दैट बाय चेंजिंग द सेट ऑफ पॉइंट्स, है ना, सेट ऑफ पॉइंट्स हम चेंज करते रहेंगे, तो पार्टीशन ऑफ ए कमा बी कैन बी चेंज्ड एंड हेंस देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ द इंटरवल ए कमा बी। अगर हम पॉइंट चेंज करते रहे, नंबर ऑफ पॉइंट चेंज करते रहे, तो हमारे पास पार्टीशंस बदलते जाएंगे। इसका मतलब एक इंटरवल के हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस बना सकते हैं। तो दस द फैमिली ऑफ ऑल partition is joined by P, A, comma, B. So you can just write here, remark, it is clear that you can say by changing the set of points, the partition of A comma B, close interval A comma B, wait a second, B can be changed, है ना, अगर आप पॉइंट चेंज करेंगे तो पार्टीशन भी बदल जाएगा, एंड hence you can say, hence there can be infinite number of partitions of the interval a comma b. Okay, thus there are so many partitions you can say, so we can denote, we find some collection of this partition, तो इसका notation है, thus the family of
the family of all partitions or partitions is denoted by P A comma. Okay, so this is it means collection of all the partition, and there are infinite number of partitions is there. Okay, so I hope you understood what is the partition. It means if we take up some partition and we have subintervals, so that is the partition, and the norm of a partition is the maximum length subinterval. It means length of a maximum length is called the norm of that partition. Okay, so now refinement. What is the refinement? It means if adding some more points in the some partition, एक partition पहले से exist कर रहा है but उसमें हमने कुछ और points add कर दिए, तो that is called refinement of the previous one. Okay, so let's define it. I'm writing is all these definitions one by one because it is very important to understand. That's why I'm writing all these things also. Okay, and you understood well it. ठीक है, आप इसको नोट करें चाहने का, बस आपको समझना है बिकॉज जब हम क्वेश्चंस में आएंगे, जब हम मेन डिफिनीशन में आएंगे रीमान इंटीग्रेशन के, तो ऑल थिंग्स इज नीडेड देयर, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू प्रूव द थ्योरम्स, तो ऑल थिंग्स विल बी देयर. ओके, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशंस. सो जैसा कि हमने बताया कि अगर हमारे पास कोई पार्टीशन है और उस पार्टीशन में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमने ऐड कर दिए विदाउट चेंजिंग एनी ऑफ द प्रीवियस पॉइंट, तो दैट इज कॉल्ड द रिफाइनमेंट ऑफ द प्रीवियस वन. ओके, सो अ पार्टीशन P2 of an interval a comma b is said to be refine, और refine कर देना, that is called refinement. Refine said to be a refinement of the partition P1 if every point of P1 is a point of P2. ओके, इसका मतलब है कि P2 के अंदर वो सारे पॉइंट्स हैं जो P1 के अंदर हैं, तो वो P2 हम P1 का रिफाइनमेंट बोलेंगे. तो फॉर एग्जांपल इफ यू कैन if P1 is a partition, looks like the partition like this. This is A naught is equals to X naught, not A naught, it's A. So is less is x1 x2 up to xn minus 1 of xn is equals to b. So okay, so this is P1 partition. Okay, अगर हम P2 को लिखेंगे, suppose that and P2 is a partition, that is your A is just equal to x naught, and that is your x1 y1 y2 up to this is your x2. मान लो सब लोग हमने यहाँ पर वाई एम और इंक्लूड कर दिए, बट x2 नहीं बदला है ना, x नॉट भी है और x1 भी है, x2 भी है और x3 भी है, और सारे हमारे पास अदर हैं, बट हमने यहाँ पर y1 से लगाकर ym तक हमने और पॉइंट्स ऐड कर दिए, तो ये हमारे पास रिफाइनमेंट कहलाएगा P2 का, P1 का. then we can say then this P2 is said to be
refinement of the partition P1. Okay. So here we can say this P2 contains all the points of P1 as well. It's containing some more points without replacing any of the point. Okay. So let's see what is the oscillatory or sum or oscillation. एक definition और पढ़ेंगे, that is called OS, oscillatory sum and oscillation. So इसमें हमारे पास क्या रहता है कि अगर फंक्शन बाउंडेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके हमारे पास इन्फिमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करेंगे. तो you just write here if fx be a bounded function, defined on the closed interval a comma b, okay, and let this is p just equal to this one. This is x naught, x1 up to xn. Okay, so this is some partition of this closed interval a comma p. So you can just write p any partition. Any partition of this closed interval a comma b. Okay, so also let this is small mr is the infimum of the function in this particular interval x r minus 1 to xr. Okay, so I'm defining this is mr, which is infimum of this is fx, so that this is x is lies between xr into xr minus 1. Okay, and this capital define this is capital mr is the supremum in this the subinterval, है ना, supremum in the same subinterval. This is your x less or equal to xr get equal to xr minus 1. Okay, for taking this is r is equals to 1 to up to n. Okay, because there are n plus 1 points. And as we know, delta r was the length of the subinterval. So if this is delta r, but here we just denoting this delta r with this expression. The expression इनको कुछ और लेना चाहिए, एक्सप्रेशन लेना चाहिए था, बट यहाँ टेक्स्ट बुक में आपके एम आर माइनस स्मॉल आर. इट मीन्स द length between the supremum and infimum. It means the difference of the supremum and infimum in this interval. And we form the sum. So this is called summation r is equals to 1 to n, and we have this is small capital R to small r, and this is your xr minus 1. So that is equals to summation r is equals to 1 to n delta r. ध्यान देना यहाँ पर जो डेल्टा आर लिया गया है दैट इज डिफरेंस बिटवीन द
supremum and infimum in that interval. Okay, so difference between the supremum and infimum in that interval. So this sum is called oscillatory sum, which we call the oscillatory sum of this fx over the partition P, and this delta R is equals to mr minus small r is called the oscillation of fx in this interval. This is x of r minus 1 of x. ओके, सो यहाँ पर जो दिस चीज है दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन, और ये जो सम है दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सम. ओके, तो जस्ट रिमेंबर दिस. So in the next lecture we will move for the upper and lower Riemann integrals. Okay, so we just gone through your textbook as well this definition, because हमने वहीं से चीजों को पढ़ाया है, समझाया है. और जस्ट लेट्स, ओके, सो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ. ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग मैथमेटिक्स विद मी. थैंक यू सो मच.